So hello and welcome to Economics by Jhadeswar. In today's lecture, we will going to learn about perfect competition in economics. This is the part 2 video in my lecturer. In part 1 video, I have already discussed what is a market, what are the types of market, all the complete detail about market and market structure in an economy. So in this part or in this video, we will going to learn about perfect competition, all the detail about it. So in this presentation, the presentation outline is what is perfect competition, its introduction, definition and its characteristics. So let's start with its introduction. So when we talk about its introduction, perfect competition means it refers to a market situation where there are large number of buyers and a large number of sellers who sell homogeneous product at uniform price. It means ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଥା କହିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଜାରର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବଜାର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବାୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେଲ୍ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରେତା ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ବିକ୍ରେତା ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଦେଖ ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଥା କହିବା ସେଥିରେ ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାର୍ମ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଆଉ ଫାର୍ମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଫାର୍ମକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ବି ଫାର୍ମ, ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ 20ଟା ଫାର୍ମ ଅଛି କି 10ଟା ଫାର୍ମ ଅଛି। ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେଟା ଫାର୍ମ ରହିବେ, 10ଟା ରୁହନ୍ତୁ କି 20ଟା ରୁହନ୍ତୁ କି 30ଟା ରୁହନ୍ତୁ କି 50ଟା ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଜିନିଷକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସେଉ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଧନ୍ୟ ଯଦି ସେଉ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସେଉ, ମାନେ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ସେଉ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ସମାନ ଜିନିଷକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସେଉ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିବେ ଆଉ ସେଉର କ୍ୱାଲିଟି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଜାର ଅବସ୍ଥା ହ୍ୱେର୍ ଦେୟାର ଆର୍ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ବାୟର ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେଲର ସେଲ୍ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରାଇସ୍। এটা ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମାନ ଜାତିର ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାନେ ସମାନ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିକ୍ରି କରିବେ, ସମାନ ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। The price is not determined by farm but by the industry. तो सही परफेक्ट कंपटीशन रे कोन होइते ना फार्म माने इंडिपेंडेंटली तांकर डिसीजन मेकिंग करथांती, आउ कोन होइते से माने फ्रीली मूवमेंट करथांती। गोटे इंडस्ट्री रो आउ गोटे इंडस्ट्री को, आउ गोटे इंडस्ट्री रो आउ गोटे इंडस्ट्री को, ताको इच्छा रे से माने जेतले देखिले जे एटी मोर मु लॉस करूची, तो आउ गोटे फार्म आउ गोटे इंडस्ट्री को चाहिले जे से जगह रे जाई मु प्रॉफिट पाई परिबी, तो से जगह को जाई परिबी, किछि सेठी रेस्ट्रिक्शन कोनोसी नाही है कि। आउ ये कौन कहला जे प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द नॉट बाय द फार्म बट बाय द इंडस्ट्री। ये आउ टिके आगु मु कहि दिके आस्थिली जे एटी दुईटा कॉन्सेप्ट, गोटे होची इंडस्ट्री, गोटे होची फार्म। तो किछि फार्म को नेकी गोटे इंडस्ट्री हिते, तो इंडस्ट्री कौन करथाय ना इंडस्ट्री रे ए जो परफेक्ट कंपटीशन रे इंडस्ट्री ही प्राइस टाको डिटरमाइन करथाय। प्राइस कौन से जो जिनस गुड़िक बिक्री हम, जो सेव कथा मुझे कहली जे गोटे इंडस्ट्री अंडर जो सेव बिक्री होची, से सेवर दाम से दोकानी माने डिटरमाइन करेंगे ना, माने फार्म माने से डिटरमाइन करेंगे ना। तो ये डिटरमाइन किए करेंगे, ये डिटरमाइन कर इंडस्ट्री। से जो किसी फार्म मान को नहीं जो गोटे इंडस्ट्रीटा को तैयारी कर जाए, से इंडस्ट्री से अनुष्ठान ही कौन कर ना तार दामटा को निर्धारित करिवो। केमिति करिवो, काहेकि करिवो, से सब भी आगु को अछि, सब भल भाव जानिबा केमिति करिवो। खाली जस्ट टिके हिट्स दे दउछि, जो टोटल मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को चेक करिवो, जो जगह भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हबो सेही जगह रे कोन करिवो ना इंडस्ट्री प्राइस टाकू इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी टा डिटरमाइन करिवो। बुझिला कथा। एबे नेक्स्ट पॉइंट को चलो। नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी, बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म कंपटीशन रेफर्स टू ए कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर। जदि आम इकोनॉमिक्स रे कंपटीशन शब्दटा जो यूज करछे, एटा गोटे मार्केट को माने कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर पे आम यूज करछे। एबे माइंड को क्वेश्चन आछे पुनी कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर कौन नहीं। देखो, the competitiveness of a market structure refers to the extent to which individual firm have the power to influence the market price. एटा कौन देखी थे ना जिते बेले गोटे इंडिविजुअल माने जन व्यक्तिगत लोक पाखरे केते पावर अच्छी, से गोटे मार्केट रे प्राइस टाको से केते इन्फ्लुएंस करि पारुछि। कथाटा बुझी पारछ ना, बाधा प्राप्त करि पारुछि गोटे दाम टाको, गोटे मार्केट तार केते कैपेसिटी अछि सेटा देखि थाए।
The less the power of the firm to influence the market price, the more the competitiveness is the market structure. जदि जन फार्म हाथ में बहुत कम पावर थी मार्केट प्राइस टाक इन्फ्लुएंस बाधा प्राप्त करने तो सेठी कंपटीशन टा बहुत अधिका बड़ जोर लेवल रे होता है कि सो तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन कह द मोर कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर इन द एक्सट्रीम केस ऑफ जीरो मार्केट पावर ऑफ द फार्म the market structure is called be perfect competition, so next point kon ko jaichi na definition dekho according to Professor Leibowitz, perfect competition is a market in which there are many firms selling identical product with no firm large enough to the entire market to be able to influence the market price. जहाँ आम इंट्रोडक्शन में पढ़ी आसले डेफिनेशन रे डिटो सही कथा प्रोफेसर लिप्टविच कहते है कि देख नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट पॉइंट रे कौन रोची ना ये आम जाना व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स or assumption of perfect competition. Mainly there are 7 characteristics of perfect competition. These are large number of buyer and large number of seller, as we already discussed. And the second point is homogeneous product जोटा मध्य आम डिस्कसन कर सारी ऑलरेडी. एंड थर्ड रे रोची इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. फोर्थ रे रोची फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट. फिफ्थ रे रोची परफेक्ट नॉलेज. सिक्स रे रोची परफेक्ट मोबिलिटी. एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होची एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट. चलो सब गुड़ा को गोटे गोटे करके कंप्लीटली बुझा सब गुड़िक विथ तार प्रॉपर नोट्स है कि. तो देख फास्ट स्टार्ट करवा फास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रे कौन कहला ना लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर. आम तार डेफिनेशन रू ही जानी दीजिए परफेक्ट कंपटीशन रे असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता रही था. तो सही कथाटा ये डिफाइन करके कहुई देख देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, बट ईच बायर्स एंड सेलर इज सो स्मॉल एज कंपेयर टू द एंटायर मार्केट दैट ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट बट एंड सोल्ड बाय हिम. माने कौन कहगला ना ये आम देखापी पाचे जे परफेक्ट कंपटीशन रे असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता रोचंती. जदि से माने गोटे फार्म कि गोटे बायर कथा आम कह जदि से टोटाल एंटायर मार्केट के इन्फ्लुएंस करें ना जदि कंपेयर करवा से टोटाल एंटायर मार्केट सह जन को तार से बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटाल मार्केट. ओके तो ये से कथाटा कहगा. एन इंडिविजुअल सेलर सेल सो स्मॉल ए क्वांटिटी of the total supply that if he withdraw from the market total supply will not fall to such an extent is to rise its price. बुझेइथिबो कथाटा जे जेते बेले एटी जने फार्म जदि बाहरी जीवो गोटे से इंडस्ट्री रू धन्य 50 जन गोटे इंडस्ट्री अंडर अच्छी तो एटी जदि आम टोटाल मार्केट सप्लाई कथा कहबा जदि जने बाहरी जीवो तो टोटाल मार्केट सप्लाईटा के भी इन्फ्लुएंस करिबो नाही, कम बेसी होबो नाही, किछि माने बाधा प्राप्त होबो नाही जनकर सप्लाई द्वारा. ये से कथाटा कह जाइए कहगला जे जदि जने फार्म गोटे इंडस्ट्री बाहरी जीव एन इंडिविजुअल सेलर से सेल सो स्मॉल ए क्वांटिटी ऑफ टोटाल सप्लाई रू जदि कंपेयर करिवे यार जनकर सप्लाईटा बहुत छोट क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी बिक्री दैट ही इफ ही विथड्रॉल फ्रॉम द मार्केट जदि से बाहरी जीव से मार्केट रू टोटाल सप्लाई विल नॉट फॉल टू सच एन एक्सटेंट इज टू राइज इट्स प्राइस. तार टोटाल सप्लाई रे आदु कम होबो नाही जहाँफल दाम इनक्रीज करिबो नाही. बुझेछि. और इफ ए सेलर डिसाइडेड टू सेल द एंटायर सप्लाई हिज प्रोसेस then total supply will not increase to such an extent as to bring down the price. Okay, so next point को चलो next characteristics तारा वैशिष्ट्य सेकेंड वैशिष्ट्य कौन कौन ना homogeneous product जेटा कम्प्लीटली मुझे ऑलरेडी डिस्कस कर सारी. तथापि कही दूँ थे देख another assumption of a perfect competition is that all sellers sell homogeneous product or homogeneous unit of a given product. The units sold by Ramo and Co are exactly identical the units sold by Samos and Co.
Consequently, buyer have no reason to prefer the product of one seller to the one of another seller. Of the product of one seller is perfectly substitute for the another farm's product. माने कहगला कौन ना जो ये दुटा ना नि दुटा एग्जांपल नि ये कहगला जे राम और साम दी जन अच्छा धन्य से गोटे इंडस्ट्री अंडर राम जो जिनस बिक्री कर साम जिनस सेम जिनस ही बिक्री कर जनक पाखे कौन माने जो जिनस किणापी आसो ता पाखर कौन सेमती किसी रिजन ना जे या पाखर मु जिनसटा न नहीं ता पाखर नेबी या पाखर माने धन्य राम पाखर न नहीं साम पाखर नब जे या रामर जिनसटा भल ता पाखर जिनसटा खराब सेमती तो केबे भी हेनी कहीं से परफेक्ट कंपटीशन अच्छी परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट रे अच्छी तो से जगह कौन होते ना समस्त पाखे सेम जिनस बिक्री हो मनकर साबुन मार्केट को आम जाइए मनकर लक्स साबुन थी है कि लक्स साबुन 40 टंकिया पैकेट या पाखे भी अच्छी 40 टंका ता पाखे भी अच्छी सो दी जन पाखे क्वालिटी भी सेम क्वांटिटी सेम साबुनटार हाँ कि नहीं तो ये माने गोटे कस्टमर पाखे कौन रिजन ही नथिबो जे या पाखु छाड़ी आउ जन पाखु जीवाई बुझी कथाटा सो देख इफ वन फार्म्स ट्राई टू राइज द प्राइस ऑफ इट्स आउटपुट अबव द मार्केट प्राइस it would lose all of its sale to other farms selling their output at the market price. जदि कौन हम ना जो इंडस्ट्री अंडर जी फार्म अच्छे जन मनकर जड़े कौन कर चाहिए मुझे अधिका दाम बिक्री करी जदि से अधिका दाम बिक्री करी कौन हम से जिनसटा तो तार बिक्री ही करें कहीं कस्टमर समस्त अलरेडी जानते समस्त पाखे सामान जिनस अच्छी तो जदि आम मनकर तुम्हें निजे मार्केट को जाइछ तुम आखि सामने 3टा दुकान अच्छी कि 5टा धन्य दुकान अच्छी तुम गोटे जिनसटा किणापी जाइछ से साबुन धन्य किणापी जाइछ कि गोटे चॉकलेट किणापी जाइछ तुम से चॉकलेट जो किणापी जाइछ 5 जन पाखे सेम चॉकलेट अच्छी से आउ सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी सबकि सेम अच्छी किंतु समस्त 4 जन पाखे मनकर से चॉकलेटा दाम हूँ 20 टंका जनक पाखे अच्छी 25 टंका तुम्हें कौटू प्रिफर कर किणापी ऑब्वियसली से जो 4 जन 20 टंका ना बिक्री कर कहीं 25 टंका जी बिक्री कर सी से सेम जिनस ही बिक्री कर 25 टंका तो तुम्हें केबे भी 25 टंका दे जिनसटी को किणापी जदि कहीं ये परफेक्ट कंपटीशन कथा जेहेतु आम कहे ये गोटे कंज्यूमर मध्य तार परफेक्ट नॉलेज थी मार्केट उपरे से केबे एमती डिसीजन नहीं नबनी भूल डिसीजन केबे नब ना परफेक्ट कंपटीशन बुझी कथाटा कहीं ना से जगार समस्त जो फार्म रही समस्त सेम जिन बिक्री तेणु आम कौन करवा ना से 20 टंका दुकान ही नहीं नवा बुझे कथाटा तेणु यहाँ हूँ कथा सो चलो नेक्स्ट पॉइंट को जीवा 3 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ना इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग बायर्स एंड सेलर्स आर फ्री फ्रॉम एनी बैरियर और रेस्ट्रिक्शन विथ रिगार्ड्स टू देयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट्स एटी क्रेता और विक्रेता मानक मध्य कौन सी रेस्ट्रिक्शन ना कौन सी बैरियर्स ना विथ रिगार्ड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट कौन सी जिनसटा को बिक्री करने किंबा कौन सी जिनस को किणापी कौन सी रेस्ट्रिक्शन ना परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रे देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर इन रेस्पेक्ट of the production quality of a price of good nor have the buyer any attraction to buy the good from the particular seller बुझी कथाटा जे एठी कौन सी एग्रीमेंट मध्य है नहीं बायर और सेलर मान मध्य तुम बाध्य मो पाखु किणव सेमती किसी कथा नहीं फ्रीली मोर इच्छा है तुम पाखु किणिली मो इच्छा है तुम पाखु न कि आउ जन पाखु किणी से कहीं कौन सी रेस्ट्रिक्शन करें ना बुझुची कथाटा अच्छा नेक्स्ट पॉइंट को चलो 4 नंबर कौन रही ना फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्जिस्ट ऑफ अ फार्म देख ये जो इंडस्ट्री अंडर जी भी फार्म रोचंती से माने इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग करेंगे माने से माने इंडिपेंडेंटली डिसीजन नेबे जे मु एई इंडस्ट्री रे रहिबी कि नाही तांको पाखे बहुत ऑप्शन रोच धन्य गोटे एरिया रे 5टा इंडस्ट्री अच्छी 5टा इंडस्ट्री रे गोटे इंडस्ट्री रे सी जो इंडस्ट्री रे मु धन्य गोटे इंडस्ट्री रे अच्छी मुझे इनकरिंग लसेस करुच्ची माने मु मोर जो जिनसटा बिक्री करुच्ची मु लॉस रे बिक्री करुच्ची इनकरिंग लसेस कौन कहूँ तुम आगु को जानिबो जो प्राइसटा डिटरमाइन होता है इंडस्ट्री रे 3 प्रकार आमको प्रॉफिट मिलता है गोटे हूँ नॉर्मल प्रॉफिट
द्वितीयटी हूँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड तृतीयटी हूँ इनकरिंग लॉसेस सेटा आगु को चलो देने जानिबो से मु आगु को पूरा डायग्राम करी सब गुड़ाक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीटली बुझेदेवी किसी असुविधा नहीं जो मैंने नुआ करके आसुँच चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु जब जापर आगू कौन सब वीडियो यार जी सब कंप्लीट पार्ट मोर सब गुड़ाक आसो से देखिए जापर है तो ये देख अंडर परफेक्ट कंपटीशन एनी न्यू फार्म कैन एंटर एनी इंडस्ट्री एंड ओल्ड फार्म कैन विथड्रॉ फ्रॉम इट देयर इज नो लीगल और सोशल बैरियर ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फार्म इनटू द इंडस्ट्री एटी जिते बड़े जड़े चाहिए जावाई से आराम से जापर आउ गोटे फार्म को मुझे कौन कहती जड़े मुझे गोटे फार्म अच्छे इंडस्ट्री अच्छे से इनकरिंग लसेस करो गोटे इंडस्ट्री मुझे जो देखिली से सब फार्म मैंने कौन कर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पाँच मुझे कौन करी ना एठू बाहर जाकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो इंडस्ट्री पाँची सेटा को जाकि मुझे रही से मोर जिनटा को सेलिंग करी तापर से भाया आउ कि फार्म अट्राक्ट हे जाकि पुणी से जगह को आम नॉर्मल प्रॉफिट को पलि आसवा तार कॉन्सेप्ट पूरा अलग अच्छे से देखा ये खाली जान दियो जे फार्म ता निज इच्छा इंडस्ट्री रे रही थाए निज इच्छा इंडस्ट्री छाड़ी जाए अंडर परफेक्ट कंपटीशन एनी न्यू फार्म कैन एंटर द एनी इंडस्ट्री एंड ऑल फार्म कैन विथड्रॉ फ्रॉम इट देयर इज नो लीगल और एंड सोशल बैरियर ऑन एंट्री ऑफ न्यू फार्म इनटू द इंडस्ट्री इट मीन्स that all new farms can easily enter industry if it appears profitable. Conversely, existing firm can leave the industry. They expect experience losses. जोटा मुझे कही दी आसली जो एग्जांपल दी तो देखो 5 नंबर कौन रोचे ना परफेक्ट नॉलेज बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द रिवेलेंट प्रोडक्ट प्राइस जो परफेक्ट कंपटीशन रे बायर और सेलर माने क्रेता एवं विक्रेता उभय कंप्लीट नॉलेज थिबो तांकर जे ए मार्केट रे ए जिनसर दाम केते ए जिनसर क्वालिटी केमती कौन कथा सबू किछि बायर्स और सेलर परफेक्टली जानी थांती कंप्लीट नॉलेज तांक पाखरे थाए द बायर विल नॉट पे ए प्राइस हायर देन द प्राइस डिसाइडेड बाय द मार्केट गोटे बायर केबे भी अधिका दाम दब ना जोटा कि गोटे मार्केट रे डिटरमाइन होती इंडस्ट्री द्वारा लाइकवाइज द सेलर विल नॉट सेल द एट द प्राइस बिलो दैट डिसाइडेड बाय द मार्केट कॉन्सिक्वेंटली यूनिफॉर्म प्राइस विल प्रिवेल इन द मार्केट से भाया कह जे गोटे सेलर मध्य केबे अधिका दाम रे बिक्री करिवो नाही तार जो इंडस्ट्री जो डिटरमाइन करछि जो दामटा जहाँ फल मार्केट रे यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है इन इट्स प्यूरेस्ट सेंस परफेक्ट कंपटीशन रिक्वायर्स दैट ऑल बायर्स एंड सेलर हैव एन एक्यूरेट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो अनसर्टेनिटी इन द मार्केट ओके सो 6 नंबर कौन कह ना 6 नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक्स कह परफेक्ट मोबिलिटी The another characteristics of perfect competition is that all resources are perfectly mobile. ये perfectly mobile माने ये तुम स्मार्टफोन कथा कहूनी ये कह जाउची जे जो resources माने जो संबल गुड़िक रही परफेक्टली मोवेबल माने गोटे स्थान रू आउ गोटे स्थान को जापर कौन सी प्रॉब्लम ना इट मीन्स दैट all resources must be able to enter or leave the market. They must be able to switch from one use to another. Labor must be able to move from one region to another and from one job to other. Raw material must not be monopolist. पूरा इजी भाषा लिखाई किसी टेंशन हबार ना है 7 नंबर कौन कह ना एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जोटा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट माने कौन बहुत मजादार जिनसटा यहाँ जे जिते बड़े गोटे फार्म आउ गोटे फार्म को गोटे इंडस्ट्री को जाऊँ आउ गोटे इंडस्ट्री को जाऊँगी मुझे जो मतलब ये देखिए मुझे इनकरिंग लसेस करुँचे मुझे देखिली से आउ गोटे इंडस्ट्री जे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पाँच तो मुझे जो इंडस्ट्री को जीवी से मुझे तो खाली पलि जीविनी मो जिनपतर नहीं जी ना बिक्री करने जेहेतु मुझे गोटे फार्म आकार कथा कहूँ तो ये जो मु जीवी गोटे इंडस्ट्री छाड़ी आउ गोटे इंडस्ट्री को तो सेठी जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट माने
जो ए जगार मुझे जगह को जावाई जी टंका मोर खर्च होती से कस्टा मुझे से मोर प्रोडक्ट उपर इम्पोज करी ना बुझे कथाटा सहीटा हूँ ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट another features of a perfect competition is that buyers and seller incur no cost in the marketing exchange. In other words, there is no cost of transport. Since it is assumed that under perfect competition all firms have an equal access to the market, it becomes imperative that no transport costs are incurred. This assumption is necessary to maintain uniform price throughout the market. Compulsory एटा जनाशुना कथा कहीं जिते ट्रांसपोर्टिंग कस्ट आम जब इम्पोज करदे से प्रडक्ट उपरे ताहले कौन हो जो जिनसटार दाम जी टंका माने कौन डिसाइड हो इंडस्ट्री द्वारा आम तो अधिक जब बिक्री करवा तो से यूनिफॉर्म प्राइस आम हो पारानी तो आम से जिन बिक्री कर ना हाँ कि नहीं ताहले से इंडस्ट्री आम रहीपर ना तेणु यहाँ गोटे बहुत ही इम्पोर्टाट कथा बहुत ही इम्पोर्टाट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ प्राय परीक्षा रे आसता है तेणु ये 7टा जाक कैरेक्टरिस्टिक्स को भल भाव में मन रख यार नेक्स्ट पार्ट जो गुड़ाक मुझे से सबू यार कंप्लीट डिटेल आनी से जो अच्छी तार तार प्राइस केमती डिटरमाइन करा जाए गोटे फार्म केते कौ प्रॉफिट पाई थे तार कंप्लीट डिटेल आम यार नेक्स्ट पार्ट रे जानिबा थर्ड पार्ट आसीबो यार बहुत जल्दी आनिबा किसी असुविधा नहीं यही सब यार जो पूर्व पार्ट जो मैंने न देखिछ मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूची से आराम से देखियो कौन से प्रॉब्लम नहीं सो आज रोची जय जगन्नाथ।